माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। Namaskar. No. Let me dispose of this. Then I'll call you. Now, the papers to be laid on the table. Sri Kalraj Mishra. महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 1 में मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर रखता हूँ। Srimati Maneka Sanjay Gandhi. Sir, with your permission, I beg to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 2. Srimati Smriti Subin Irani. I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 3 in today's list of business. Dr. Jitendra Singh. With your kind permission, I beg to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you, Chairman, sir. Sri Mukhtar Abbas Naqvi. With your permission, I rise to lay on the table of the House the paper listed against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Sri Upendra Kushwaha. आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। Sri Krishan Pal. आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के समक्ष दिए गए दस्तावेजों को मैं सभा के सदन पटल पर रखता हूं। प्रोफेसर डॉक्टर रामशेखर कथारिया। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर अपने नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। Message from the Lok Sabha Secretary General. I beg to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 9th of March 2016 passed the Enemy Property Amendment and Validation Bill 2016. I lay a copy of the bill on the table. Report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice. Dr. E.M. Sudarshan Anachepan. Thank you, sir. I beg to present the 80th report in English and Hindi of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice on the subject synergy between tribal justice system and regular justice system in the country. Motion for election to the Committee of Public Undertakings. Sri Mukhtar Abbas Naqvi. Sir, with your permission, I rise to move the following motion. The House scores the recommendation of the Lok Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 7 members from the Rajya Sabha to associate with the Committee of Public Undertaking for the term of being 1st May 2016 and ending on 30th April 2017 and due process to elect. In such manner, the chairman may direct 7 members from amongst the members of the House to serve the said committee. Motion moved. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, motion is adopted. Now, motion for election to the Committee on Public Accounts. Sri Mukhtar Abbas Naqvi. महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं। यह लोकसभा की सिफारिश से सहमति प्रकट करती है कि 1 मई 2016 से प्रारंभ होने वाले 30 अप्रैल 2017 के समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए लोक सेवा समिति से संबंध होने के लिए राज्यसभा अपने सदस्यों में से 7 सदस्यों को नाम निर्देशित करने के लिए सहमत हो और उस रीति से जैसे सभापति निर्देशित करें, सभा के सदस्यों में से 7 सदस्यों को उक्त समिति में कार्य करने के लिए निर्वाचित करने की कार्रवाई करें। Motion moved. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, motion is adopted. Now, motion for election to the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Sri Mukhtar Abbas Naqvi. महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा संकल्प करती है कि 1 मई 2016 से प्रारंभ होने वाले और 30 अप्रैल 2017 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी दोनों सभाओं की समिति में सम्मिलित हो एकल संक्रमणीय मत अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार सभा के सदस्यों में से 10 सदस्यों को उक्त समिति में कार्य करने के लिए निर्वाचित करने की कार्रवाई करें। Motion moved. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, motion is adopted. Point of order. What? श्रीमन, Under what rule? संविधान में कौन व्यक्ति सदन का सदस्य बनेगा? संविधान में इस बात का उल्लेख किया है कि इस सदन का सदस्य बनने के लिए
इसका उस सदन का भी सदस्य बनने के लिए क्या क्या औपचारिकता पूरी करनी पड़ेगी? नहीं भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, भगोड़ा नहीं होना चाहिए। श्रीमान 2 दिन से बराबर चैनल में आ रहा है कि सदन के एक सदस्य देश छोड़ के भाग गए जबकि उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस है और उस पे सारी एक आलोचना का What is the point of order in that? मैं उठा रहा हूँ, एक आलोचना का बिंदु उस पे बना हुआ है। What is the point of order in that? मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई सदन का सदस्य वो औपचारिकता नहीं पूरी कर रहा तो क्या सदन का सदस्य रह सकता कि नहीं रह सकता? मैं इस बात को उसको उठाना चाहता हूँ और मैं इसी को मैं शायद लीडर अपोजिशन भी शायद इसी को उठाना चाहती हूँ। So, yeah. What is LOP? What do you want? सर मैं एक बहुत Rajani ही Patel, what are you saying? Sit down, sit down. When your leader is standing, why do you make noise? सर मैं एक बहुत ही गंभीर विषय इस सदन के सामने लाना चाहता हूं। सर जब ये सरकार सत्ता में आई थी हमें बहुत खुशी हुई थी, इस वादे के साथ आई थी कि 1 साल के अंदर या कुछ महीनों के अंदर ही ब्लैक मनी वापस लाया जाएगा। लेकिन पिछले साल ललित मोदी को लेकर के बाहर हैं, देश से वापस लाइए, उनके खिलाफ चार्जेस हैं कई करोड़ के, ये गवर्नमेंट असफल रही उसको देश में लाने Your के notice is not on Lady. लिए। I am coming to that. That is not. My notice is, सर अब आज उसको तो हम वापस नहीं लाए और वो सब देश भी भूल गया, सदन भी भूल गया, वो पैसा चला गया। लेकिन एक नई घटना हो गई कि एक बिजनेसमैन विजय माल्या जिसने अपना बिजनेस चलाने के लिए करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया, 9,000 करोड़ से ज्यादा बैंकों से लिया, कंसोर्टियम बनाकर स्टेट बैंक के द्वारा, और बिजनेस कितने चलाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन टेलीविजन में हम लगातार साल से देख रहे हैं कि किस तरह से उनका लाइफस्टाइल था पूरे विश्व के अंदर, किस तरह से ऐश व अशरत की वो जिंदगी उस पैसे से गुजारते थे। और हमें तब खुशी हुई जब 29 जुलाई 2015 को सीबीआई ने उनके खिलाफ क्रिमिनल केस किया फॉर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और डाइवर्शन ऑफ फंड्स। अब हम सोच रहे थे पूरा देश कि अब वो पकड़ में आ गया, ये 9,500 करोड़ बैंकों का जो लोन है और जिन बैंकों में इस देश के गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई का पैसा जमा है, ये उस ऐशो अशरत की तरह के लिए इस्तेमाल न किया जाए, एक व्यक्ति की तरह ये पैसा वापस आएगा। उसकी इंट्रोगेशन भी हुई और 4 डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इसी तरह से सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, तीसरी एजेंसी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने, और चौथा तो सीबीआई था ही। सर मुझे बहुत ही आश्चर्य कि सीबीआई कहता हमने लुकआउट नोटिस दी थी। लुकआउट नोटिस देश के तमाम एयरपोर्ट्स पे दी गई हो उसको ढूंढने की। विजय माल्या कोई सुई नहीं है और शायद कोई भी आदमी नहीं इस देश में या विदेश में जिस तरह से 1 साल से उसको पब्लिसिटी मिल रही है, और उसकी शक्ल को शायद कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो जानता नहीं, और खास विशेष रूप से एयरपोर्ट पे तो सवाल ही नहीं है। और लंबा चौड़ा सेहतमंद आदमी है, 1 किलोमीटर से वो दिखाई देगा उनके डोल डाल से, चलन से, और वो अकेला नहीं चलता है, पूरी हूरों के साथ चलता है। हूरें
आप तो देखते हैं टेलीविजन पे, और जो लोग पार्टियां अटेंड करते हैं इस सदन और बाहर से, तो वो तो शायद उन हुर्रों से मिलते भी होंगे। उसकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो गायब हो जाता है और हमारे अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि हमने लुकआउट नोटिस दे दिया था, लेकिन वो देश से भाग गया, देश से भाग गया। सर, मेरा आरोप है इस सरकार पर, जब इतनी एजेंसियां उसकी इंट्रोगेशन कर रही थी, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उसका पासपोर्ट जब्त क्यों नहीं हुआ था? यह सबको मालूम है कि वो ऐसा परिंदा है कि एक दिन एक डाल पे होगा, दूसरे दिन दूसरी डाल पे होगा। विश्व के हर एक देश में उसके ठिकाने बने हैं। ये कोई साधारण आदमी भी सोच सकता है कि वो कभी भी भाग सकता है। तो सबसे पहला काम इन तमाम एजेंसीज को करना चाहे था, उसका पासपोर्ट जब्त करना चाहे था, उसको जेल में डाल देना चाहे था। मेरा यह आरोप है कि उसके भागने में, उसके देश छोड़ने में यह सरकार पार्टी है। इस कॉन्स्पिरेसी में, इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भारत सरकार पार्टी बनानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसको नोटिस लेना चाहिए। For discussion, you should have notice. Party active participation and without the No. active support No, of I this tell you, government, he could have not. 267 leave is this not country. permitted by That is my chairman. allegation, Honorable. I allowed him because he is LOP. Sir, 1 minute, sir. Sir, leader of the house wanted to. Sir, leader of the house. Leader of the house wanted to say something. Yes. Yes. Honorable Leader of the House. Leader of the House. Leader of the House. Listen to him first. The point is, no, see, Sir, Honorable LOP, please. notice, This is not there is no notice. कोई नहीं बोला है. There is no notice. Leader of the house बोल रहे I हैं. allowed बोल रहे him हैं तो ये because he ठीक is LOP. Otherwise, you should give a हमारा notice. request है कि आप हमारी बात सुनिए. आप सुनने के बाद आप No समझ में notice. आएगा कि हकीकत क्या है. He was allowed because he was LOP. Because 267 was not allowed by chairman. Now my problem is, I'll tell you, Honorable Chairman has not permitted the 267. Ghulam Nabi Azad was allowed because he is LOP. So LOP can say it, that for you there should be notice. Okay, anyhow, listen to the minister, leader. No, in any case, when I allowed LOP, I had to allow leader of the house also. No, I agree, but you listen to me. Point of order? Sit down. No. Sit down. Sit down. No. मैंने point of order कहा था, article Okay, I'll come to you. आप जो है वो केवल No, listen. और सुनने की आप Listen. सुनना नहीं चाहते. ये ठीक नहीं है. You listen to me. आपने सुनाया है If तो you सुनिए want, भी. you listen to me. If you want, you listen to me. You go to your seat. Go to your seat. Now listen. I tell you. Please bear with me and please give me indulgence for 2 minutes. Number one, there was a 267 notice from Sri Ghulam Nabi Azad, and there was another notice from Sharad Yadav for some other subject which was taken up yesterday. Now, the 267 notice was not permitted by Honorable Chairman, number one. But since LOP stood up and said he want to raise an important matter, being LOP, I allowed and I have to allow. Therefore, it is quite natural that when LOS wants to
respond to that, I have to allow. Let LOH speak. After that, if necessary, I can listen to your issue also. But let LOH. That is the natural thing. Point of order. Okay, let me react. 84 में मैंने उठाया था. 84, let me see. Your notice is not here. Yeah. 0 hour. When I take 0 hour, I will call you. No, 0 hour I will call you. When I take up that. Let me come to that. No, 84. Let me take 84 and read, because I am not a expert in constitution. For membership of parliament. But qualification for membership parliament. Yes. उसमें 3 दिए क्लास हैं. A, B, C. सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, काउंसिल ऑफ स्टेट में अगर आना है 30 साल का उम्र होना चाहिए, और अदर लॉ जो पार्लियामेंट में बनाए हैं उनको पूरा करना चाहिए. श्रीमान, पार्लियामेंट ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों के अंतर्गत वही व्यक्ति सदन का सदस्य होगा, दिवालिया ना हो, भगोड़ा ना हो, राष्ट्र के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त ना हो, ये सब चीजें उसमें दी हुई हैं. श्रीमान, इस सदन का एक सदस्य अगर वो सदन में चुन के आया है और उन शर्तों को तोड़ देता है तो या तो एथिक कमेटी को जाए, एथिक कमेटी अपनी क्योंकि इसके पहले मैंने देखा लोकसभा में 1-1 हजार रुपए पे लोगों की चली गई. यहाँ 9,000 करोड़ का मामला सदस्य का, और उसके बाद वो बना रहे. मैं आपसे सहमत है. I agree with you that this is a matter to be taken up in the ethics committee. I think according to the procedure it could be done. No doubt about it. I agree with you. Now finance minister. No. Now leader of the house. Sir, No. I explained to you the reason. I explained to you the reason. I allowed leader of opposition, so I have to allow leader of the house. Leader of the house, yes. It is natural. No. I will not break that convention. No. I am not going to break that convention. No, please. No, I have allowed the leader of the house. I called, the floor is for him. Now he can speak. Nobody else. No, not going on record. Not going on record. Sit down. Not going on record. Tyagi ji, baithiye. 0 hour, I will call you. Sit down. Yes. अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री गुलाम नबी आजाद साहब ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है. जिन कंपनीज और व्यक्ति के बारे में जिक्र किया है, मैं केवल 2-3 तथ्य स्पष्ट सामने रख दूं. उस कंपनीज को और उन व्यक्तियों को जो पूरी बैंकिंग सुविधा दी गई जो आज विवाद में पड़ी है, वो पहली बार सितंबर 2004 में दी गई. उसको दोबारा रिन्यू किया गया 2 फरवरी 2008 को. उसके संबंध में किन हालातों में जब अकाउंट बिगड़ा हुआ था और फिर भी सुविधाएं दी गई, ये जांच के विषय हैं. सीबीआई इसकी जांच कर रही है. पहली बार इनका अकाउंट 30 अप्रैल 2009 को एनपीए हुआ. उस एनपीए के बावजूद भी 21/12/2010 को उस नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट को रिस्ट्रक्चर किया गया और रिस्ट्रक्चरिंग के तहत उनको और सुविधाएं दी गई. और इसलिए ये किस तरह से अकाउंट्स चल रहे थे, क्या क्या सुविधाएं ऐसे लोगों को दी जा रही थी, ये डेट्स अपनी कहानी खुद बतलाती हैं. आज एनपीए को रिस्ट्रक्चर किसके सपोर्ट से किया गया? उस वक्त हम तो विपक्ष में थे. इस सारे के बाद आज की तारीख में 30 नवंबर 2015 तक इंटरेस्ट वगैरह मिलाकर 9,091.40 करोड़ ये टोटल लायबिलिटी उसकी है. जितनी भी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं
उन सब ने अलग अलग कंपनीज और व्यक्तियों के खिलाफ रिकवरी की, अटैचमेंट की, जो कार्रवाई हो सकती है। और मेरे पास इस वक्त 22 केसों की सूची है जो कि देश भर के अंदर उनके खिलाफ फाइल किए गए हैं। उन्होंने भी कुछ केसेस फाइल किए हैं। उसके अलावा उनके एसेट्स कई अटैच कर लिए गए हैं और बैंक्स पूरे कदम उठा रहे हैं कि एक एक पैसा जो इन कंपनियों से और इन व्यक्तियों से रिकवर करना है वो लोग रिकवर करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया, वो विषय सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि बैंक सुप्रीम कोर्ट भी मूव किए हैं कि उनको बाहर जाने की अनुमति, उनका पासपोर्ट सीज किया जाए। वो उससे पहले जा चुके थे। आप अगर उदाहरण चाहते हैं तो मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूं कि जहां लोग, उस दिन कोई आदेश नहीं था उनको रोकने का किसी एजेंसी का। आपने जो जिक्र किया, आपने दूसरा उदाहरण भी जिक्र किया कि ललित मोदी को लाने के लिए क्या किया। वो जब बाहर गए थे तो आपकी सरकार थी। आपने केवल फेमा में केस रजिस्टर किया था, जिसमें ना रोक पाने की सुविधा है ना सजा दे पाने की सुविधा है। पीएमएलए में नहीं किया था, वो बाद में हुआ था। तो इसलिए ये लोन कब दिए गए, कैसे दिए गए, एनपीए को कैसे रीस्ट्रक्चर किया गया, अगर आजाद साहब चाहें तो मैं उनको चेंबर में सारी इसकी डिटेल्स दिखला भी सकता हूं। कम से कम आपको स्वयं बहुत अधिक आत्मनिरीक्षण की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। I want to just honorable leader of house ने जो बताया कि डेट्स पढ़ के इन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि जैसे कांग्रेस पार्टी इसमें शामिल। सर, इस साइड में शायद, बल्कि इस साइड मिलाकर शरद जी को छोड़कर सबसे ज्यादा लंबे अरसे में तक और सभी कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टरों के साथ इंदिरा जी से लेकर और पिछले मनमोहन जी तक मैं गवर्नमेंट में रहा और रिकॉर्ड है, आज तक हमने एक नए पैसे की भी किसी को बैंक लोन की सिफारिश नहीं की, एक नए पैसे की। तो सत्ता में रहने का मतलब नहीं, ये बैंक वाले गरीब आदमी को अगर 5,000 रुपए लोन लेना है उसका भी 1% लेते हैं। ये बैंक न मनमोहन सिंह जी के में है, न इंदिरा गांधी, न राजीव गांधी, न आपके और मैं हमारे लोगों के तो बिल्कुल ही बस में नहीं थे। ये बैंक सब 1%, 2% और 5% पे चेयरमैन और सब ऊपर जिसकी भी अथॉरिटी 5,000 है वहां से लेकर ऊपर तक पैसे लेकर करते हैं। इसलिए जिसने भी इन्वॉल्व है, बैंक वाला है, पॉलिटिशियन है, इसमें उसको सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, उसको भी लटका दीजिए ना उसके साथ। जिसने भी किया है करिए, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन मेरा यह आरोप था कि अगर मैंने ललित मोदी का खाली उधार दिया कि एक भाग गया, उससे हमको सतर्क रहना चाहिए था कि दूसरा ललित मोदी न बढ़े। ये मेरा उधार था। शरद यादव जी, आपका नोटिस 267 वर्ल्ड कल्चरल, आपका नोटिस 267 वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल कल उड़ाया था, इसलिए चेयरमैन परमिट नहीं किया है। कल ये सब्जेक्ट उठाया था, इसलिए चेयरमैन परमिट नहीं किया है, ऑनरेबल चेयरमैन नहीं किया है। मैं अभी क्या करूं? ये सब्जेक्ट कल हो गया, उसके बारे में ओके या no please no what is I think if you want a discussion on this subject, please give notice. I think no then you see on notice on what subject? 0 hour. Then let me take up 0 hour.
Yeah. Because, okay, Sharad Yadav ji, आप बोलना है बोलिए उसके बाद I will go to 0 hour. No, I want to see if any more discussion is needed on this subject. ने जो सवाल उठाया है और जो सदन के नेता ने जवाब दिया है, अजीब हालत है। यानी इस देश के जो पैसे वाले थैली शाह हैं, ऐसे कानून बने हुए हैं कि उनका कुछ बिगड़ नहीं सकता। यानी ये आदमी के बारे में इतना सब कुछ घपला होने के बाद ये देश से बाहर चला आप इसके बारे में नोटिस दीजिए, नोटिस दीजिए। Now I take up 0 hour. Now Shri Vijay Devarlal Darda, Sir, what do you want? Two minutes. No, if I allow you 2 minutes, all of you will go back and will not travel? Okay, then go back. Go back, go back, go back, go back, go back, go back. Hey, Vijay Darda. Vijay Darda. What is this? Why do you disturb the 0 hour? No, I am, see, Mr. Namandeep Krishnan, I will allow you 2 minutes, but ask your members to go back and take your seat. After Vijay Darda, I will give you 2 minutes. After Vijay Darda, I finish Vijay Darda. Now, honorable members, no, that's what I am saying. I am saying 0 hour. I am coming to 0 hour. It is coming. Sit down. Sit down. Sit down. Vijay Darda. Yes. You finish? Sir, I have not started yet. Sir, मैं इस सदन का I want to run 0 hour. You allow me. महत्वपूर्ण You don't want 0 hour. जानना चाहता हूँ कि प्रतिबंधित मनुस्मृति के पुनः प्रकाशन से पूरे देश के अंदर माहौल बिगड़ रहा है। आपने देखा होगा कि जिसको 10 साल पहले मनुस्मृति ग्रंथ को सरकार ने बंदी लाया था, उस ग्रंथ को फिर से प्रकाशित किया गया हुआ है और विष्णु शास्त्री बापट नाम के इस व्यक्ति ने your subject your subject is loss of recent hailstorm Vidarbha region. No, that is the subject. You have to say only that. So मनुस्मृति ग्रंथ जो है, जिस मनुस्मृति जो ग्रंथ है, no, it's not permitted. That is not permitted. That is not permitted. That is not permitted. Sit down. Not permitted. Yes. Only 2 minutes. Namandeep Krishnan, 2 minutes. All of you sit down on that condition. After 2 minutes, nobody from your side should disturb the house. 2 minutes. No. I tell you, no, that is your promise. You adhere to that. Yes, then take 2 minutes. Yes. Thank you, sir. Our honorable. Sit down. Thank you, sir. Our honorable Chief Minister Amma has written the letter to the honorable Prime Minister to withdraw the review petition pending before the Supreme Court of India against the judgment of the Supreme Court. And also, there is a cabinet note by the central government contemplating common entrance examination for the state quota medical seats. The Tamil Nadu government strongly opposed that move. So, we urge the central government to withdraw the review petition and also not to introduce the common entrance examination for the state quota medical seats. We strongly condemn it. Okay, thank you. Now, Sri Sanjeev Kumar. Sanjeev Kumar. Okay, you want that. महोदय धनबाद जिले के संजय कुमार प्रखंड में I will convey the feeling of the honorable members and demand of the honorable members to the concerned minister for appropriate action. Appropriate action. Sit down, ठीक है. Now, संजीव कुमार बोलो. महोदय धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड में स्थित सीमा पाथर गांव में करीब 10 दिनों से सैकड़ों लोग अर्धनग्न अवस्था में धरने पर बैठे हैं। ये लड़ाई और धरना आदिवासियों की तीसरी पीढ़ी लड़ रही है, जो निराश तो है पर थके बिल्कुल नहीं है। महोदय, ये बात 1954-56 की बीच की है, जब 240 गांव के 12,000 परिवारों से 38,000 एकड़ जमीन एवं 5,000 घर को डीवीसी द्वारा डैम बनाने के नाम पर अधिग्रहण किया गया था।
जिसके कारण कई गांव डूब गए थे। महोदय, बाद में डीवीसी द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था और 9500 विस्थापितों को नौकरी दी गई थी, परंतु विस्थापित आंदोलनकारियों का मानना है कि 9000 ऐसे फर्जी लोगों को नौकरी दिया गया है जो विस्थापित नहीं है और जिन्होंने वास्तव में कोई जमीन मकान नहीं गंवाया है। विस्थापितों की पीढ़ी दर पीढ़ी न्याय और हक की मांग के लिए आज भी लड़ रहे हैं। महोदय, पंचायत और मैथन डैम के विस्तार के कारण हुए विस्थापित लोगों की विकट समस्या एवं उसके उपरांत हुए फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार के खिलाफ यह उत्पन्न आंदोलन घटवार आदिवासी महासभा के बैनर तले लड़ा जा रहा है। महोदय, आंदोलनकारियों का ये मानना है कि झारखंड के धनबाद एवं जामताड़ा जिला के अलावा वेस्ट बंगाल की जमीन जो इन डैमों को विस्तार के लिए अधिग्रहण किया गया था, इस संबंध में विस्थापितों की ओर से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया जा चुका है। महोदय, आंदोलनकारियों का मानना है इस फर्जीवाड़े में बड़े बड़े नेता, नामधारी लोगों के अलावा डीवीसी के अधिकारी लिप्त हैं, इसलिए राज्य सरकार मामले की जांच रिकमेंडेशन सीबीआई से नहीं कर रही है, जबकि गृह मंत्रालय इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दे चुका है। महोदय, आंदोलन के समय के साथ दबा नहीं है बल्कि बढ़ता जा रहा है। आंदोलनकारी हजारों की संख्या में पुरुष, स्त्री आकर जंतर मंतर में अनिश्चितकालीन धरना के अलावा पूरे झारखंड के विस्थापितों को एकजुट कर बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए संकल्प है। महोदय, डीवीसी का इतिहास रहा है कि किसानों को जमीन एक्वायर करने के बाद उन्हें मुआवजे के एवं नौकरी के लिए लटका कर रखना। डीवीसी ने मैथन पावर लिमिटेड के विस्थापित करने के लिए किसानों का हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहण करने के बाद कुछ लोगों को ही कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नौकरी दिया है, बाकी लोगों को आजकल के नाम पर टाला जा रहा है। महोदय, सीमा पाथर के आंदोलनकारियों का मानना है कि सरकार ने उनके जमीन अधिग्रहण के बाद कोई मुआवजा या नौकरी नहीं देकर उन्हें भूखा नंगा रखने पर मजबूर किया है, इसलिए वे अपना आंदोलन अर्धनग्न अवस्था में रहकर जारी रखना चाहते हैं ताकि संसार को ये पता लगना चाहिए कि आज तक आजादी के इतने वर्षों के बाद भी सरकार ने आदिवासियों विस्थापितों के साथ क्या व्यवहार किया है। अतः इस सदन के माध्यम से उन हजारों लाखों आदिवासियों को विस्थापकों की तरफ से मांग कर दिलीप कुमार या शरद यादव जी सपोर्ट करते हैं। ऑल दोस्त सपोर्ट। उपसभापति महोदय जी, थैंक यू उपसभापति महोदय जी। आंध्र प्रदेश में पोलावरम परियोजनाओं को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया है, मगर उड़ीसा की जो चिंताएं हैं उनका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। हम लोग या हमारी सरकार डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने में चूक हुई है। पोलावरम प्रोजेक्ट पर काम जारी रहने से उड़ीसा के अनेक गांव के डूबने के खतरा पैदा हो गया है। इसमें से अधिकांश गांव ट्राइबल आबादी वाले हैं। इसमें हजारों लोग विस्थापित होने जा रहे हैं। इस परियोजनाओं में से हजारों एकड़ खेती का जमीन भी डूबी जाएगी और बड़ी मात्रा से संरक्षित वन क्षेत्र भी नष्ट हो जाएगा। हमारा यह कहना है कि परियोजना पर काम होने के साथ साथ पुनर्वास और पुनर्वास मुआवजा का भी ठोस इंतजाम होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट में डैम की ऊंचाई अगर 1980 के मूल समझौते के अनुसार रखी जाए तो बहुत सी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। इस परियोजनाओं में मूल रूप से 36 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की क्षमता प्रस्तावित थी, मगर आंध्र सरकार ने एक तरफा कार्रवाई से इसे बढ़ाकर 50 लाख क्यूसेक कर दिया। इससे उन इलाके के पर्यावरण को भी भारी नुकसान होने की आशंका है। पर्यावरण को होने वाले नुकसान से भरपाई के लिए भी अभी तक कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है। इससे प्रभावित होने वाले राज्यों में सिर्फ उड़ीसा नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना भी है। इसके लिए हमारी ये मांग है कि इतने बड़े पैमाने पर ट्राइबल आबादी के प्रभावित होने और पर्यावरण और खेती की जमीन को नुकसान होने की भरपाई के लिए समुचित व्यवस्था करके बाद ही पोलावरम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के काम किया जाए। थैंक यू सर। Thank you very much. Yes, all those who are associated will be added. Yes, all the names will be added. Sri KTS Tulsi? No. Sri Rajiv Chandrasekhar? No.
Sri Jairam Ramesh. Sri Jairam Ramesh. तुलसी जी आ गए हैं आ गया. Oh, sorry, wait. Jairam Ramesh, Tulsi ji आ गया. I will call you later. After Tulsi. After Tulsi. No, KTS Tulsi. All the names will be added. KTS Tulsi, please. KTS Tulsi. No, no. You sit down. Your time is over. No, no, sit down, sit down. No, all your names will be added. That is for them. I can't say. KTS Tulsi. Bhupendra, sit down. Sit down, sit down. KTS Tulsi. Don't trouble him. You sit down. Pariyaji. No, no. If that is up to the minister, I cannot ask him. Sit down. No, 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 no. I cannot ask him. This is not allowed. Now see, 0-hour submission means you can have your submission. Government to reply or not reply is up to the government. I cannot ask the government. If that is so, no, don't. If that is so, you give special mention notice. If you give a special mention notice, government will examine it, government will consider and reply, give you reply also. But you make 0-hour submission and then demand reply. No, it cannot be done. Sit down. Sit down, sit down. Tulsi. No, 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 no. I cannot ask. Tulsi, why are you encroaching on the time of KTS Tulsi? Bhupendra, you are a sit down, Bhupendra. I am not allowing, nothing will go on record except what Tulsi says. But sir, KTS Tulsi. this is not proper. No, it's not going on. It will also not go on record. Government is silent. KTS Tulsi. Honorable Deputy Chairman, sir. KTS Tulsi. I want to refer to a very important development with regard to non-performing assets of the public sector banks, which continue to surge, and the balance sheets of the banks continue to bleed. I submit that publicly traded banks in India added nearly 1 trillion in bad loans in the quarter which ended on 31st December, amounting to 29% increase in the stocks of this deteriorated debt from end September. The central bank expects the cleanup, which started with regard to from December quarter, to be able to restore the health of the banks, revive lending, and in turn boost economic growth. But the aggregate net profit of 39 listed banks fell by 98% to 307 crore in December quarter from 16,806 quarters in the year earlier. Such has been the surge in bad loans that it has wiped out the profits of 12 out of 39 listed banks. India's third largest state-run bank, Bank of Baroda, reported a third quarter loss of 3,342 crore, the highest by any lender in the December quarter. The Indian Overseas Bank, which has been under the RBI observation, has the highest gross NPA ratio of 12.64%. The UCO Bank, United Commercial Bank, which reported a gross NPA ratio of 10.98%, has the second highest ratio of bad loans across the sector. Instead, most of them would have had to depend upon infusion from the government, which the government has assured would be readily available. However, the NPA ratio continues to surge. Even as I speak, it is expected of the government that it will take concrete and urgent steps to contain the present situation. The government should apprise the House as to what steps they are taking against willful defaulters and why there is no action against those people who were declared willful defaulters almost a year ago. Despite the clear and distinct RBI guidelines, why did the Master Circular dated July 1, 2014, and I read from this circular of the Reserve Bank of India clearly, no time. So, Michael, Jairam Ramesh. Sri Jairam Ramesh, please. Over.
Over. Sri Jayara Ramesh. Mr. Deputy Chairman, sir. Sir, can I start? Yes, please. Mr. Deputy Chairman, sir. Yeah, please. Jayara Ramesh. The leader Sri of the Jayara Ramesh. opposition has just raised the issue of a leading industrialist who is right now in London. The non-performing assets of this industrialist works out to about 9,200 crores. The leader of the House tried to portray that all the loans that were given to this industrialist were during UPA 1 and UPA 2. But that is not the issue that I am raising today. He gave only the date. So what I want to raise today didn't say UPA is that evidence has surfaced this morning that on the 28th of February, the banks met the lawyers and the lawyers told the banks to file a petition in the court on the 29th of February to prevent Mr. Mallya from leaving India. The banks did not file the case till the 5th of March. Till the 5th of March, the case was not filed. The Attorney General makes the admission that Mr. Mallya has left for London on the 2nd of March, and this admission was made yesterday on the 9th of March. Sir, this evidence has come out. The names of the lawyers have been mentioned. Under the circumstances, the key issue is, why were the banks asked to delay approaching the courts to prevent Mr. Mallya from leaving India? That is the only issue. The issue is not who gave loans to Mr. Mallya. The issue is, why was Mr. Mallya allowed to leave India, even though the lawyers had told the banks on the 28th of February that in view of the fact that Mr. Mallya might leave India, the case should be filed on the 29th of February. The case is filed on the 5th of March. This is the real issue which the leader of the House has evaded. Okay, thank you. Now Sri Digvijay Singh. Sri Digvijay Singh, you are sure our notice. Now Sri Digvijay Singh, all those who associate will be added. Name will be added. Yes, all the names. Sri Digvijay Singh, you are sure our subject. माननीय उपसभापति महोदय, इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को, छात्रों को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप का प्रावधान केंद्र सरकार के बजट में है। 31 मार्च 2016 को ये फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो जाएगा। सरकार ने नेशनल पोर्टल बनाने की योजना बनाई थी, जिसके माध्यम से इन छात्रवृत्तियों का वितरण होना था, लेकिन वो नेशनल पोर्टल क्रैश हो चुका है और आज तक देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से इस बारे में अनुरोध करूंगा कि ये लाखों करोड़ों छात्रों का प्रश्न है और वो भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों का। गुजरात सरकार तो अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं देती, वो हमको सबको मालूम है, लेकिन अब इस हालात में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों का हक न मारा जाए। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा, क्योंकि ये अनुसूचित जाति सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का भी मसला है, ट्राइबल मिनिस्ट्री का मसला भी है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का भी मसला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा वित्त मंत्री जी से कि नेशनल पोर्टल का जो प्रयोग था वो होता रहेगा, लेकिन किसी भी हालत में इन छात्रों का हक ना मारा जाए, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है। Okay, धन्यवाद, thank you. Yes, okay, all those who associate name will be added. Tapan Kumar Sen, your 0 hour. Thank you, Chairman sir, Deputy Chairman sir. Yeah. I am a bit delayed in raising my issue. Please. अच्छा. उपसभापति महोदय, जो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने स्कॉलरशिप से रिलेटेड इशू उठाया है, हमारी सरकार पूरी
मुस्तैदी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ जो स्कॉलरशिप के लिए जो जिन छात्रों को मिलना चाहिए उसको उनको देने के लिए प्रतिबद्ध है। जो स्पेसिफिक इशू जिस इशू को आपने कहा है, अगर कहीं पर इस तरह की घटना जो किसी राज्य में या किसी जगह पर आपको पता है तो अगर आप हमको देंगे तो हम इसको संबंधित मंत्री को और संबंधित मंत्रालय को हम उसको बताएंगे। Okay, Sri Tapan Kumar Sen. Sri Tapan Kumar Sen. Okay, that's all. Now Sri Tapan Kumar Sen. Sir, That's all, that's all. Now sit down. please, No. please stop them. Then only I See, can don't start. encroach on the time of Tapan Kumar Sen. PK. Sri Tapan Kumar Sen. कैसे बोलेंगे? Okay. Tell them to stop. Nothing else will stop. And restart the Yes, clock. yes. Tapan Kumar Tell Sen them to stop and restart. starts now. Nothing else will go on record. Starts now. Yeah. May be delayed. I Yeah. should have raised the issue on 8th March itself, on the International Women's Day, but I could not because I could not get the chance. Again, I took a chance on 9th. Again, because of the dean, I lost that You opportunity. speak about this. Your Please subject. let us not today lose the opportunity. It is on the Women's Day. Entire House has pledged to empower women, to bid justice to women. But the worst kind of repression and discrimination the women are facing in the place of work, in the world of work. The Equal Remuneration Act is being flagrantly violated in the name of ease of doing business, and women worker in construction, in beery, in plantation, where they have big women population, they are being given much less wage compared to the same work being done as per their male counterpart. And on the situation, the problem is of enforcement, rather, but unfortunately, that Equal Remuneration Act is being diluted further, as the Labour Ministry proposed in their Labour Code Bill. So only soundbite cannot bring justice to women. Secondly, the government itself is the biggest violator. The almost 1 crore scheme worker, Anganwadi, midday meal, Asha, who are maintaining the human development standard of the country, they are being not recognized as worker even, and as usual being deprived of the minimum statutory wages and social security benefit. The agenda, the issue is being raised since long by the entire scheme workers movement. But if government takes a lead to deprive the workers of the statutory minimum wage, who can save them? So it is not enough to pledge for empowering women and meeting justice to them. It is something that is to be done on the ground. And I think both the concerned ministers are here, both HRD minister and our health minister, looking after midday meal and ASHA and Anganwadi's child and women welfare department. Please take care of their long pending demand. They don't want more than recognition as a worker to ensure statutory minimum wage and the attendant social security benefit. Please let us don't do justice only by sound bites. Let us do some justice in terms of action. That is my demand before Thank the you very government. much. Yes, all those support. All the names will be added. Yes, including my name. Okay, Sri K.K. Ragesh. I said all the names to be added, including my name. Thank you, Sri sir. K.K. Ragesh. I would like to bring through you, sir, before this August House regarding the pathetic living condition of the people of inhabitants of Lakshadweep are concerned. The Union Territory of Lakshadweep was formed in 1956. Even after the formation of even after 60 years of its formation, the government failed to ensure basic needs of the people of Lakshadweep. Proper healthcare facilities and higher education facilities are not ensured for the people of the Lakshadweep.
in Lakshadweep, everything is in uncertain. അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടോ? Yes, I went there, sir, many times. That is why I'm saying all these things. And I would like to bring one vital issue I before asked this whether August he had House gone there. That's regarding, if we take up the example of healthcare, till today, no referral hospital is being established by the central government in Lakshadweep. There is no referral hospital. Government had already sanctioned 12 posts for specialist doctors, but only one single post is being filled up on regular basis, and rest of the 11 posts are lying vacant. There is no doctors in various small hospitals established in different deeps. That is the situation, and they have to depend upon Kerala for every issue, and they have to be taken to Kerala if on emergency cases. The Lakshadweep administration had to deport, had to send them on evacuation. They have to evacuate these patients to Kerala, and every year the administration is spending around 15 crores of rupees for evacuation during the emergency cases, when the emergency issues comes. And why can't the administration use this huge amount for setting up a referral hospital with all speciality provisions? So that is not been done. And another pathetic thing is that if the patient died in Kerala or outside Lakshadweep, their body is not being deported in Lakshadweep. That had to be buried in Kerala. See, I should appreciate the External Affairs Ministry that takes lot of effort for bringing the body of those people working in abroad. And why it is not applicable to the people of Lakshadweep? It is a very vital issue, very sensitive issue, and I am requesting the central government immediately intervene and ensure that at least. All right. Yeah, Dr. Balachandra Mungekar. Yeah. All right. All those who associate will be added. Dr. Balachandra Mungekar, yes, all the names will be added. Dr. Mungekar, yeah. We associate with Rajya. All the names will be added, including Praful Patel, yes. Now, Dr. Mungekar. Sir, thank you. Agreed. Yeah, Dr. Mungekar. Sir, thank you very much. I strongly condemn, when I refer to this house, the incidence of victimization of female teacher member belonging to the scheduled caste, Miss Shashi Mawar, who is a faculty member of Nursing College under the All India Institute of Medical Sciences. A caste-based conspiracy is hatched by Dr. Manju Vatsa. No, don't mention. Don't mention the names who cannot come and defend here. I expunge that name. I withdraw. I expunge that name. Okay, please, I myself will expunge. All right. The conspiracy is hatched by the principal of the nursing college, as well as the director of the administration and the director of AIMS. Sir, this country is supposed to be the holy land of the culture for the entire world civilization. Hundreds of instances are taking place every day that there is caste-based discrimination against the scheduled caste and scheduled tribes, and all sorts of humiliation, indignity, infirmity, exploitation, all of them, they are heaped upon them. Dr. Ambedkar has called that caste as a monster, and this country has never taken note of that this monster is killing the all fabrics of the socio-political and cultural life of the country. In this particular instance, we discuss how the conditions were created under which force Rohit Vemula, who was unfortunately or regretfully referred by the HRD minister child, while internationally known scholar of both social sciences and natural sciences, the conditions were created where he was compelled to helplessly commit suicide. Now, under these present conditions, I expect that the Ministry of Health and Family Welfare should investigate into the matter and put this end to this kind of conspiracy. In every sphere, government offices, students, teachers,
the other officials, they are subject to victimization, and the conditions are created. Sometimes they are retiring, they are resigning, they are giving up the job, and sometimes helplessly they are committing suicide. This is the greatest blot on the culture we are talking about. That is, under these conditions, I expect that the government immediately should investigate the matter into the allegation, these kind of complaint made by her, so far the All India Institute of Medical Sciences is concerned. Thank you very much. Thank you, Sri Naresh Agarwal. Yes, all the names whose support will be added. Sri Naresh Agarwal. माननीय सभापति जी, मैं सदन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की जाने वाली उपेक्षा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश से हैं, स्मृति ईरानी जी भी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हैं, कलराज जी बैठे हुए हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। लेकिन श्रीमान, हमारे मुख्यमंत्री जी ने करीब 100 पत्र लिखे होंगे केंद्र सरकार को कि उत्तर प्रदेश को विभिन्न मदों में पैसा दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार के मंत्रियों ने उन पत्रों का एक्नॉलेजमेंट तक देना उचित नहीं समझा। जवाब तो अलग। एक परंपरा हरदम रही है कि प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाते रहे हैं और उत्तर प्रदेश के विकास के संबंध में बात करते रहे हैं। चुनाव में बड़े वादे किए गए थे। जब बनारस से चुनाव लड़ा जा रहा था तब प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के विकास की तमाम बातें करी, लेकिन दुर्भाग्य भी 28 फरवरी को बरेली में किसान रैली प्रधानमंत्री जी ने आयोजित की। उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के ही ऊपर तमाम आरोप लगा दिए, जबकि सत्यता यह है कि हमारी सरकार ने इतनी चीज़ों की मांग करी। कम से कम 10 मंत्रालय ऐसे हैं जिनको पत्र लिखे कि उत्तर प्रदेश को विशेष सहायता दी जाए। यहाँ तक जो हमको मिलनी चाहिए सहायता वो भी नहीं मिल रही, बल्कि रैली में हम पे आरोप अलग लगा दिए गए। हमने उत्तर प्रदेश में किसानों का जो फसल की नुकसान हुआ, हमने 3000 करोड़ मांगा, मात्र 257 करोड़ दिए। उसके ऊपर भी कह दिया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार पैसा नहीं मांग रही। क्यों नहीं जाती है? एक उपेक्षा है। उत्तर प्रदेश एक प्रदेश नहीं, एक देश के समान है। 21 करोड़ आबादी वाला उत्तर प्रदेश, जहाँ से 80 MP चुन के आते हों, लेकिन उस प्रदेश की आप उपेक्षा सिर्फ राजनीतिक कारणों से करें, बदले की भावना से करें, इस मारे करें कि सरकार बदनाम हो जाए और असेंबली के चुनाव में हम वहाँ से जीत के चले आएँ। अगर इन चीज़ों से सरकार इन भावनाओं से होकर अगर बदले की भावना से काम करती, क्यों नहीं? उचित नहीं किसी भी दशा। ठीक है, हम राजनीतिक दल हैं, हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं, हमारे मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी प्रदेश का विकास रोक दिया जाए। गुजरात को तमाम पैसा दे दिया जा रहा, महाराष्ट्र को तमाम पैसा दिया जा रहा, हरियाणा जहाँ कुछ नहीं हो रहा है वहाँ आज कोई जिम्मेदारी नहीं संभाली जा रही है। लेकिन इतना बड़ा राज्य होने के बाद जिस प्रकार उपेक्षा हो रही है, हम उसको कंडेम करते हैं। और माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आपका तो आदेश है कि MPओं के पत्रों का एक्नॉलेजमेंट जाना चाहिए, हम लोग के पत्रों का एक्नॉलेजमेंट नहीं आते। स्मृति ईरानी जी बैठी, इनके कई पत्र हमने लिखे, इन्होंने कहीं एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया। यहाँ तक ये हरदोई गई तो इन्होंने मुझे बुलाना भी उचित नहीं समझा। ये हरदोई पहुंची, मैं वहाँ से MP हूँ, इन्होंने मुझे बुलाना भी उचित नहीं समझा। अगर ये इस तरीका का व्यवहार होगा तो श्रीमान मैं इसको बहुत उचित नहीं मानता हूँ और मैं मांग करता हूँ कम से कम उत्तर प्रदेश की उपेक्षा बंद। Minister wants to say. Naresh ji is a very senior and seasoned parliamentarian, but we should not use the forum to just make an allegation against the government of India. As far as the government of India is concerned, there is no question of discrimination against any state. Every state is an Indian state. The centre do not show any discrimination. But the problem, shall I tell you, please help. My MPs are all crying that none of them are taken into consideration, this party or that party, by the state government. They are not called for the meetings. District collectors are not. इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए जी बुलाया वो आए नहीं, बुलाया है प्रधानमंत्री, हमेशा बुलाते रहते हैं, नीति आयोग मीटिंग में बुलाया। आरोप करना है तो आपका अधिकार है, आप आरोप करिए, मुझे आपत्ति नहीं, बट सर ये गलत है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन, बट द रेलेवेंट थिंग व्हिच ही सेड अबाउट ए पर्टिकुलर मिनिस्टर विल ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द मिनिस्टर। ओके, थैंक यू। श्री हुसैन दलवाई, श्री हुसैन दलवाई सर, श्री हुसैन दलवाई।
taking into consideration the particularly backward Yes, status of scheduled Smriti- tribes, Smriti Irani, a Smriti. dedicated Yes, so, component since within I the was budget named by the was honourable member, created during I the would fifth like to hear five-year very- plan Hussain and Dalwai. was called Dalwai sir. Hussain Dalwai, 1 second. I would like to, sir, Hussain very Dalwai, humbly please. put forth. Minister, time Sir, over. since I was named It by is the over. honourable member, Later, I would like question to very hour. humble. Later, no, later. I have to, sir, Question give an hour, explanation now. It is time for Mr. question hour. Agarwal was not a Rajya Sabha member from that nodal district. I had to give respect to the